अस्सलाम वालेकुम। Okay, ji, we did graphs of functions, and then we did the sketches as well. Now we'll move forward, and the next thing is further graphs. I mean graphs, further graphs. कौन से we'll do the travel graphs now. Travel graphs mean distance time graph and speed time graph. And this topic is also called kinematics. Sir, you sent us a graphs ki worksheet. Have we discussed that already? Oh, the worksheet which I sent yesterday. Yes, sir. The graph worksheet. Have you attempted that? Yes, sir. उसके अंदर question 3 और 6 और 7B में issue है. Okay, wait. Let me open that. Okay, question 3. This one? Yes, sir. Okay, question 3 says the sketch shows the graph of y is equal to ax raised to power n, where a and n are integers. Write down a possible value for a and a possible value for n. Okay, tell me कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ Sir, quadratic का. है? सो क्वाड्रेटिक. सो अगर ये क्वाड्रेटिक है, सो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होनी चाहिए? 2. 2. So it means, can you tell me the value of n then? Sir, 2 होगा. Yes. So it means n should be 2. क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है और क्वाड्रेटिक ग्राफ में x स्क्वायर इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे x पावर n है, तो इस मीन दिस n शुड बी 2 सो दैट यू कैन गेट x स्क्वायर. तो n आपने डिसाइड कर लिया, इट इज 2, सो x स्क्वायर बन जाए ताकि. नाउ वी वांट टू डिसाइड अबाउट a. ओके, आपको ये बात पता है कि ग्राफ में समटाइम्स आपका ग्राफ ऐसा बनता है, हैप्पी फेस ओपनिंग अपवर्ड एंड समटाइम्स सैड फेस ओपनिंग डाउनवर्ड. हाउ विल यू आइडेंटिफाई इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों की इक्वेशन में डिफरेंस क्या होगा? Sir, जो ऊपर वाला with the happy face, it would have like a positive gradient and the other one would have a negative one. It's not basically gradient. This A doesn't show gradient. Gradient of curve तो हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है. हाँ, ये कह सकते हैं the coefficient of x square is positive. It means it will be a happy face opening upward U shape. And if the coefficient of x square is negative, then it will be a sad face opening downward, उल्टा U बनता है. So अब आप इसमें देखिए तो इसमें your graph is opening downward, sad face, ulta U. So it means the coefficient of x square should be negative. Mean A should be negative. अब वो नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. हो सकता है ये हो माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ये -2x स्क्वायर भी हो सकता है, -3x स्क्वायर भी हो सकता है,
-4x² भी हो सकता है। मीन इट कैन बी एनीथिंग, बट वन थिंग इज श्योर कि ए होगा नेगेटिव। सो आपको उसने कहा राइट डाउन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, कोई एक वैल्यू आप बता दीजिए इसमें। सो आप ए की पॉसिबल वैल्यू -1 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -3, -4, -5, कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा ए एंड एन आर इंटीजर्स। So the value of n is fixed, it's 2, and a can be anything, -1, -2, -3, so I'm writing -1. Why not positive? Because अगर ये positive हो तो कर्व अपवर्ड ओपन होनी चाहिए थी। ओके जी, नेक्स्ट बताइए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? Sir, question 6. Okay, here is question 6. Question 5 and 6 are similar. अब आप 6 अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके बाद आप 5 कर सकेंगे अगर आपने वो नहीं किया तो। Okay, the graph shows a sketch of the curve y is equal to p over x. y is equal to p over x का ग्राफ बना हुआ है हमारे पास। ठीक हो गया? तो ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट गिवन है x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 0.4, and the other point is x coordinate is q and y coordinate is 2.4. ये these 2 points are given. हमें ये बात पता है कि कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। दे शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन का मीनिंग ये है कि आप कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स लाए करते हैं x कोऑर्डिनेट 3 एंड y कोऑर्डिनेट 0.4, वो पॉइंट्स आप इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मीन ये पॉइंट भी हम पुट कर सकते हैं। सो अगर ये पॉइंट पुट कर सकते हैं क्योंकि ये उसी कर्व के ऊपर लाए करते हैं, तो लेट्स डू दैट। चले पुट करते हैं। हमें फाइंड करना है ना पी एंड क्यू, तो आप ये पॉइंट पहले पुट कीजिए x3 एंड y 0.4। सो y 0.4 and x3. So we have used that point in that equation of the curve. So you'll get the value of p. So what's the value of p? The value of p 0.4 into 3 is 1.2. So we got the value of p 1.2. So the question was find the value of p and q. तो p तो हो गया। अब q कैसे फाइंड करना है? एक बात कि अब आपके पास p की वैल्यू आ चुकी है, नाउ योर इक्वेशन will become 1.2 over x. Mean your equation, now you have the value of p, it will become y is equal to 1.2 over x. ठीक हो गया? Now how to find q? अब आप ये पॉइंट उसके अंदर पुट कर दीजिए। Mean its x coordinate is q and y coordinate is 2.4. X coordinate is q and y coordinate is 2.4. यहां से अब आप q फाइंड कर सकते हैं। सो q हम उस तरफ ले जाते हैं और 2.4 इस तरफ। So the value of q is 0.5. Value of p is 1.2 and the value of q is 0.5. Ji Ikra, is that clear now? Yes, sir. Okay, next. Sir, question 7 का part A हो गया था, but part B where it asks you to draw like sketch a graph. May I know the answer of A part? Yes, this one. What's the answer for A part? इकरा, आपके पास आंसर है ए पार्ट का भी? No, sir, अभी नहीं है।
ओके, बेसिकली उसी पे डिपेंडेंट है। हम पहले फिर ए पार्ट कर लेते हैं। ओके, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ पी। इब्राहिम बताना है आपने कैसे करेंगे। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ पी। When P is equal to 2, R is equal to 24. Find the formula for R in terms of P. बताइए इब्राहिम, how to do this? ये कौन सा टॉपिक है? सर इसके अंदर R इक्वल्स के पी क्यूब होगा, फिर हम उसको इक्वेट करेंगे, हम उसका जनरल फार्मूला निकालेंगे। इब्राहिम, ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वेरिएशन टॉपिक है, प्रोपोर्शन भी इसको कहते हैं। ग्रेड 8 में नॉर्मली आप D2 में करते हैं। R is directly proportional to cube of P. So R is directly proportional is directly proportional to mean K times cube of P. Cube of P mean P cube. अगर ये इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन R is equal to K times P cube. अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहता तो हम लिखते R is equal to K over P cube. ठीक। अब हमारा फर्स्ट टास्क क्या होता है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस K. और वो K कैसे फाइंड करेंगे? इट इज गिवन दैट P is 2 and R is 24. P is 2 and R is 24. So 24, Ibrahim, 2 cube is 8. 2 times 2 times 2, 8. So 24 is equal to K times 8. Ibrahim, what's the value of K? 24 divided by 8, it is 3. So आपके पास K is equal to आ गया 3. So K जो आपके पास 3 आ गया वो आप इसमें पुट कर दीजिए. So you will get R is equal to 3P cube. So the question was find the formula for R in terms of P. So we have found the formula for R in terms of P. So R is equal to 3P cube. So ये part A ग्राफ्स के साथ नहीं था. इसका B part is basically which is graphs. Let's see what is B part. Now the question is B part is which of the diagram below represents the graph of R against P. मीन ऊपर जो R against P इक्वेशन है R is equal to 3P cube, उसका ग्राफ इनमें से कौन सा है? सो साइन वो इक्वेशन कौन सी है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, रेसिप्रोकल, एक्सपोनेंशियल, व्हिच इक्वेशन इज दैट? कम से कम लीनियर तो ना बोलते ना यार. आप बताइए भाई, पावर क्या है? अब मैं नाम बोलता हूँ, आप बताइएगा इनमें से कौन सी होगी. लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. जी, तो क्यूबिक इक्वेशन है पावर 3 है. अगर पावर 2 जो होती है जिसमें क्वाड्रेटिक होती है, जिसमें पावर मैक्सिमम 1 होती है वो लीनियर होती है. सो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन. अब क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है? मैंने आपको बताया था क्यूबिक का ग्राफ वो स्फीयर की तरह एक ग्राफ बन रहा होता है. मीन कुछ ऐसा ग्राफ बनता है. अगर पी क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ये बनता है, अदरवाइज ऐसा बनता है. अब आप देखिए इन ये जो जितने भी ग्राफ्स बने इनमें से कौन सा ग्राफ हो. ऐसा करें, कुछ रिजेक्ट करें. सबसे पहले तो डायग्राम 4 हम रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये तो लीनियर का है. और ये डायग्राम 5 भी ये रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए नॉर्मली होता है. अगर डायग्राम 1 के ग्राफ देखिए, ग्राफ कंप्लीट नहीं बना हुआ, आपको हाफ ग्राफ बना हुआ है, उसी से आइडेंटिफाई करना है.
अगर मैं डायग्राम 1 का ग्राफ जो बना हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं ताकि आपको क्लियर हो, तो कुछ ऐसा ग्राफ है। सो आप देखिए डायग्राम 1 इज नॉट क्यूबिक, क्यूबिक ऐसे नहीं होती। अगर डायग्राम 3 को भी एक्सटेंड करूं फर्दर ताकि आप ग्राफ क्लियर कर सकें, तो वो ये ऐसे बने। क्यूबिक ग्राफ ऐसा भी नहीं होता। अगर डायग्राम 2 को मैं फर्दर एक्सटेंड करूं, सो नाउ यू विल सी कि डायग्राम 2, इकरा आपने जो गेस किया था दैट वाज राइट। सो डायग्राम 2 इज बेसिकली क्यूबिक ग्राफ जो कि हाफ ग्राफ बना हुआ है। सो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट था, but diagram 2 is the right answer. R is equal to 3pq. Okay, done. Okay, Ikra, did you do question 4? Yes, sir. Any problem? No, sir. Okay, right. So अब हम काइनेमेटिक्स नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। अभी मैं फिर इसी की कुछ और फर्दर प्रैक्टिस करवा। Okay, let's do this part. B part is, this is a sketch of the graph of y is equal to pa raised to power x, where a is positive. मैं ग्राफ इक्वेशन को मैं क्लियर करता हूं। इट इज रिटन y is equal to pa raised to power x. जी ग्राफ आप देख सकते हैं y is equal to pa raised to power x. पार्ट 1 इज, एंड दिस ग्राफ आप ग्राफ भी देख सकते हैं, ग्राफ जो ड्रॉ हुआ है, दिस इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 0, 4 and 236. क्वेश्चन इज राइट डाउन द वैल्यू ऑफ p. जी साईं बताइए, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p? So the graph curve is given and its equation is also given. You have to write the value of p. जी साइन इब्राहिम, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हमने किया। जी इकरा, टेल हाउ टू डू this part 1. Sir, we will take the point and like equate it in the equation. Yes, perfect. जब आपके पास कर्व की इक्वेशन भी है, कर्व भी है, तो कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट 0, 4, कोई भी पॉइंट आप चाहें उस कर्व में पुट कर सकते हैं। सो आप पुट कीजिए, देखिए जो आपको अननोन फाइंड करना है वो आपके पास आ जाएगा। सो सपोज हम 0, 4 पहले पुट करते हैं। 0, 4 मीन x is 0, y is 4. So y is 4, x is 0. Ibrahim, what's the answer of a power 0? What is a power 0? Anything raised to power 0 is 1. X power 0 is 1. A power 0 is 1. 10 power 0 is 1.
So a power 0 is 1. So p times 1 is p. So the value of p आपके पास आ गई 4. So we got the value of p 4. Now second part, you have to find the value of a. तो आपकी वो जो इक्वेशन है वो अब आपकी बन जाएगी y is equal to, अब आपके पास p आ चुका है 4 a raised to power x. Now how to find a? अब आप दूसरा पॉइंट पुट करें 236. 236 means x is 2 and y is 36. X is 2 and y is 36. So let's put x is 2, y is 36. So 36 divided by 4 is 9. So a square is equal to 9. So a is square root of 9 is 3. और क्योंकि ग्राफ ये राइज कर रहा है, वैसे तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस से लिखते हैं, ये ग्राफ राइज कर रहा है, इसमें a की वैल्यू पॉजिटिव 3 होगी. So we got the value of a as well. The value of a is 3. There is another part for this question. Third part, let's see what is that. It says the graph passes through the point 4q. ये ग्राफ पॉइंट 4q से भी पास करता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ q. जी, कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ q? सेम मेथड. अच्छा, अब आपके पास a भी आ गया एंड यू हैव p एज वेल. सो आपकी इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी, इट विल बी y इज इक्वल टू a is 3, sorry, p is 4. Sorry, I got disconnected. Okay, I was doing the last part. और उससे पहले हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, पहले वो इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन वाज y is equal to p a raised to power x. हम इसमें से ऑलरेडी p फाइंड कर चुके हैं 4 और a फाइंड कर चुके हैं 3. सो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन बन गई है वो है y is equal to 4 times 3 power x. Now its third part was the graph is also passing through point 4q. अगर वो ग्राफ पॉइंट 4q से पास करता है, इसका मतलब पॉइंट 4q भी इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम. सो आप इसमें पुट कीजिए, जो आपको q फाइंड करना है वो आ जाए. लेट्स सी हाउ. सो q, x is 4 and y is q. So y is q and x is 4. So हमने y में q पुट कर दिया और x में 4 पुट कर दिया. So we got q is equal to 4 into 3 power 4. 3 square, Ibrahim. 3 square. 3 cube. 3 power 4. 81. So 3 power 4 is 81. So आपको 4 मल्टीप्लाई करना है 81 के साथ. बताइए क्या आंसर आएगा. 324. So the value of q is 324. जी क्लियर है.
Okay ji, look at this question. We have four equations. One equation is y is equal to x square minus 2x, then y is equal to 2x square minus 2, y is equal to x square plus 2x, and fourth equation is y is equal to 2x square. The graphs of these three of these equations are sketched below. Write down the correct equation below each graph. अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो सब में द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सेकंड में भी पॉजिटिव, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, और जो नीचे थ्री ग्राफ्स बने दे ऑल आर ओपनिंग अपवर्ड, सो हैप्पी फेस, तो सब पॉसिबल है. सो ये x कोएफिशिएंट से तो कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा. नाउ वी विल टेक द हेल्प ऑफ y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट मीन ग्राफ y एक्सिस को कहां क्रॉस कर रहा है, ये बताइए. y एक्सिस को कहां क्रॉस कर रहा है? जीरो पे. ये y एक्सिस को कहां क्रॉस कर रहा है? नेगेटिव नंबर पे. हमें -1 है, -2 है, वो नहीं पता, लेकिन नेगेटिव पे क्रॉस कर रहा है. और ये y एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है? ये भी जीरो पे क्रॉस कर रहा है. सो डिसाइड करना मुश्किल हुआ है. जरा देखते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें. ओके, आप ऊपर देखिए कि हर किसी का y इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए पहले. अगर आप y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हो तो y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड किया जाता है? y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x0 पुट करते हैं. ये कल भी बताया था मैंने. हाउ टू फाइंड y इंटरसेप्ट? पुट x इज इक्वल टू 0. एंड हाउ टू फाइंड x इंटरसेप्ट? पुट y इज इक्वल टू 0. आप ऐसा कीजिए, इन तीनों सब इक्वेशंस के x y इंटरसेप्ट फाइंड कीजिए. मीन इसमें x0 पुट कीजिए. इसमें जब x0 पुट करेंगे बताइए y क्या आ रहा है? जी ट्राई करें, बताएं. इस इक्वेशन में अगर आप x0 पुट करें तो क्या आ रहा है? y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? यार पुट करें ना, 0 पुट करना है और आंसर आप लोगों ने बताना है, वही मेरा वेट कर रहे हैं. पुट करें हम 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, 0 ही आएगा. सो इसका y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? 0. सेकंड का बताइए y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है? x0 पुट कीजिए. अगर उसमें x0 पुट करें हम, ये देखें यार, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2. इसमें x की जगह 0 पुट कर दीजिए तो -2 आ जाएगा. सो y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है इसका? -2. नेक्स्ट का y इंटरसेप्ट बताइए. 0. लास्ट का y इंटरसेप्ट बताइए. 0. चले, इस y इंटरसेप्ट की बेसिस पे क्या आपको पता चल रहा है कि कौन इस किसी भी ग्राफ की इक्वेशन कौन सी हो सकती है? सेकंड में देखिए, इसका y इंटरसेप्ट क्या था? सिर्फ इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और वहां पे ग्राफ में एक ही इक्वेशन है जिसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव है. सो इसका मतलब वी हैव डिसाइडेड अबाउट दिस इक्वेशन. इसके बारे में तो डिसाइड हो चुका है कि इसका ग्राफ, इस ग्राफ की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2. जी इकरा, यहां तक क्लियर है आपको? सर. अब बाकी प्रॉब्लम ये है कि बाकी तीनों जो इक्वेशन है उसका y इंटरसेप्ट क्या है? वो 0 है. और बाकी जो दो ग्राफ है उन दोनों का y इंटरसेप्ट भी 0 है. तो वो तीनों पॉसिबल है इनके लिए. नाउ y इंटरसेप्ट से इसका मतलब नहीं पता चल रहा. अब हम हेल्प लेंगे x इंटरसेप्ट. तो बाकी थ्री इक्वेशन में वी विल टेक द हेल्प ऑफ x इंटरसेप्ट. आप बताइए x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? y0 पुट करके. x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? y0 पुट करना है. चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहां करने लगा. देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x. इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, मीन y0 पुट कर दीजिए. ये कौन सी इक्वेशन है? इसको सॉल्व करना है, यहां से x फाइंड करना है. कैसे सॉल्व करेंगे? x कॉमन लें. इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो एक आंसर 0 है और दूसरा आंसर 2 है. एक आंसर 0 है, दूसरा आंसर 2 है.
तो इसके एक्स इंटरसेप्ट आ गए 0 एंड 2। ठीक हो गया। अब आप इस इक्वेशन को जरा सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहे हैं। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और बताइए इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहे हैं। वैसे तो मेंटली समझ आ रहे हैं, बट अगर आपको नहीं हो रहा तो करके देख लीजिए। मीन 0 पुट कर देंगे x की जगह, y की जगह x² + 2x। To solve this equation, take x common, x + 2. Again, either x is equal to 0 or x + 2 is equal to 0. So we got x is equal to 0, x is equal to -2. So इसके x intercept आ गए 0 and x intercept is -2. Now solve the last equation, उसके x intercept find कीजिए। So जो last equation है उसमें अगर y में 0 पुट कर दें तो you will get 0 is equal to 2x²। 2 डिवाइड कर रहे हैं 0 से तो वो 0 ही हो जाएगा, x² is equal to 0। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लें तो वो भी 0 आ जाएगा। तो इसके x इंटरसेप्ट 0 ही है, सिर्फ एक ही x इंटरसेप्ट है। जी अब आप बताइए, ग्राफ को देखिए। अब आप प्लीज देखिए, अब इस ग्राफ को देखिए, इसके कितने x इंटरसेप्ट। ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे मीट कर रहा है? 1 पॉइंट पे। और वो 1 पॉइंट क्या है? 0। इसके बारे में तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, इसको तो सोचना ही नहीं है। इसके कितने x इंटरसेप्ट हैं? एक 0 है और एक पॉजिटिव नंबर है, कोई हमें वो पॉजिटिव एग्जैक्ट नहीं पता। सो आपके पास फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसके भी 2 x इंटरसेप्ट थे, इसके इक्वेशन के भी 2 x इंटरसेप्ट हैं, और जो लास्ट इक्वेशन है इसका सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट 0। तो आपके पास एक ही x इंटरसेप्ट सिर्फ इस इक्वेशन का है। समझ रहे हैं ना? तो आपके पास इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी y is equal to 2x²। सो ये भी डिसाइड होगी। नाउ यू हैव टू टेल मी कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में से, फर्स्ट और थर्ड में से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है, फर्स्ट का या थर्ड का? फर्स्ट का। उसकी रीजन कि उसके एक्स इंटरसेप्ट 0 एंड +2 है। 0 एंड +2, देखिए ये 0 एंड दिस इज +2। वेयर एज ये जो थर्ड इक्वेशन थी ये वाली, इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 और -2 था। So this is not possible. So it means the first one is possible. So y is equal to x² - 2x. जी क्लियर है? तो आपका ये कैसे डिसाइड करना है कि हाउ टू फाइंड आउट कि which one is the sketch of which equation. So इसके साथ अब आप हमारा ग्राफ्स ऑफ फंक्शन ड्राइंग भी और स्केचिंग भी कंप्लीट हो गया है। Now we will start kinematics, graphs of kinematics, travel graphs in the next class. Thank you so much. Allah Hafiz.